Hello students. Now, first of all, I will welcome to all of you online class. Students, now the lockdown hype is continuing. Are you feeling so happy? Yes, you are feeling so happy. Students, you know we are continuing online class. So that let us start the today's topic, that is the Olympic champion and the dogs. Students, you know in previous classes we have discussed हमें पूर्व क्लास मान करे पढ़ी थिले the topic that is the Olympic Games. Let us rediscuss about those. When the Olympic Games started, how the Olympic Games was started, why the Olympic Games was started, you have all known. And who started the Olympic Games and who started the modern Olympic Games, how many rings are the symbols of Olympic Games. There are 5 symbols of 5 continents, and also we have discussed the modern Olympic champion, Frenchman, the player. His name was Baron Pierre de Coubertin. His motto was, the Olympic Games is not to win, to participate. Olympic के तांकर मुख्य लक्ष्य थिला कोन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स खेल हो एवं से खेल रे सब देशर खेल माने भाग नियंतु एवं से खेलर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स रो आधुनिक ओलंपिक गेम्स रो मुख्य लक्ष्य हेबु कोन ओलंपिक गेम्स रे जितिबा बड़ कथा नुहे एवं भाग नेबा सब खेल मानक प्रति एक बड़ सुजोग. Okay students, we have discussed such type of lessons. Today we will start the new topic, that is the Olympic champion and the dogs. First of all, let us know about the topic. आसो हमें जानिबा प्रथमे ई टॉपिक की काहे बेस कराइछि. The Olympic, you know the name of a game. We have discussed in last class. And the champion is a great player, winning player. The player who wins the medal, gold medal, silver medal and bronze medal in Olympics, he is known as the champion player. The Olympic champion and the dogs. Dogs, you all the students, you have all seen. Dogs are the birds. Yes or no? Yes, meaning in Odia, बत्तख माने. Okay, the students, the Olympic champion and the dogs. Olympic champion एवं dogs सहित कौन रिलेशन अछि ता ऊपर बेस करी की ए टॉपिक टी अछि. We will have to discuss gradually. Okay students, and now you open your book and page number 62. First you look the pictures. Here are 2 pictures. Look, here are 2 pictures. Have you looked? Samay dekhilo. The pictures are related. One is a person. He was rowing a boat, and in first picture, so in second picture, the dogs are swimming in a river or pond. पोखरी रे बत्तख माने पहुंचंदी नदी रे पहुंचंदी एवं जने लोक से रोइंग करूची नौचालना करूची. Okay students, let us
start the SCP-1 sense group paragraph 1. You listen mindfully. Now you close your books. Listen mindfully. Then you will read the SCP-1 yourself silently. Then I will ask some questions. First of all, listen. Bobby Pierce was born in Sydney in Australia. Bobby Pierce was born in Sydney in Australia. Australia, you know, all the students, Australia is a small continent of the world, and it is also a great country on earth. Australia गोटे छोट महादेश एवं यह एक बड़ देश। ऑस्ट्रेलिया महादेशटी इट इज सिचुएटेड बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। भारत महासागर एवं प्रशांत महासागर मझिरे ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट टी अछि। बुझि पाछन नै? भारत महासागर एवं प्रशांत महासागर मझिरे एई ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट अवस्थित। बॉबी पियर्स वाज ए चैंपियन प्लेयर। हु वाज बॉबी पियर्स? Bobby Pierce was a Olympic champion. He was born in Sydney city in Australia. Australia रे Sydney शहर रे बॉबी पियर्स जन्म होइथिले। से जने ओलंपिक चैंपियन थिले। His father was a great schooling champion. तन बापा जने कोन थिले? स्कूलिंग चैंपियन। स्कूलिंग मीन्स नौचालना रे जन चैंपियन थिले। ओलंपिक गेम्स रे नौचालना गोटे इवेंट करा जाय, सेथिरे से प्रतियोगिता भाग लेथिले एवं सेथिरे से गोल्ड मेडल जीतिथिले एवं चैंपियन हेथिले। When Bobby was 5 years old, Bobby जेतले 5 वर्ष थिला, he was going around Sydney Harbour in a small boat. से गोटे ऑस्ट्रेलिया रे थिबा जो हार्बर शहर रे थिला शिप, विभिन्न प्रकार शिप, बोट्स, छोट छोट बोट्स, बड़ बड़ बोट, शिप्स एगुलो थिला। सेथिरे से ही वाज प्रैक्टिसिंग हाउ टू रोज, हाउ टू गेन नॉलेज इन स्कूलिंग। व्हेन ही वाज ओनली 5 years old, जेतले से केवल 5 वर्ष थिले। ए लिटिल लेटर ही वोन द फर्स्ट रेस। किसी दिन परे से जीतिले। से गोटे प्रतियोगिता है स्कूलिंग रोइंग रेस, से जीतिले। ही वाज कंपीटिंग एग्नेस्ट ए 14 years old। से 14 वर्षर प्रतियोगी सहित प्रतियोगिता कले एंड ओन, एंड ही डिफीटेड टू हिम एंड ओन द मेडल्स। वन ऑफ द जजेस आस्क्ड हिम एट द टाइम, सेतबे जने विचारपति पचारले, हाउ ओल्ड आर यू? तुम केते वर्ष? हाउ ओल्ड आर यू नाउ? बर्तमान तुम केते वर्ष? He answered him. से जजेस विचारपति को उत्तर देले, सर आई एम ओनली 6 years प्राउडली। एवं गर्व सहित कहले मु केवल 6 वर्ष। ओके स्टूडेंट्स, रिमेंबर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स, one who have taken training before participating in Olympic games. Okay students, this is the small SCP science paragraph. Now I have read before you. बर्तमान मु पढ़िली, you have listened me also, you तमे मते सुनिलो। Now you read silently, then I will ask some questions. Okay students, you read. Now I will ask some questions. Who was Bobby Pierce? Bobby Pierce किए थिले? Who can say? Bobby Pierce was a champion player in Olympics.